வாங்க கொண்டாடிட்டு போங்க. வணக்கம். நான் உதயச்சந்திரன் பேசுகிறேன் சென்னையிலிருந்து. ஸ்வீடன் வாழ் தமிழர்களுக்கு, ஸ்டாக்ஹோம் தமிழ்ச் சங்கத்தின் உறுப்பினர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள். பொங்கல் விழா கடல் கடந்தும் கண்டங்கள் கடந்தும் கொண்டாடப்படுவது குறித்து மிக்க மகிழ்ச்சி. தமிழ் மரபு குறித்தான தேடல் அதிகம் உள்ள காலகட்டம் இது. தமிழ் மரபை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்று தமிழர்கள் உலகெங்கும் பயணப்பட்டு கொண்டிருக்கும் நேரம். எல்லாரும் வாங்க கொண்டாடி போங்க. హలో అండి. ఈ ఈస్టర్ హాలిడేస్లో ఫర్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైం మేము మా బ్యాచ్తో కలిసి స్వీడన్ స్టాక్హోమ్లో ఉన్న గురుద్వార్కి వచ్చాము. నేను ఇండియాలో కూడా ఎప్పుడూ అమృత్సర్లో ఉన్న గోల్డెన్ టెంపుల్కి వెళ్ళలేదు. సో ఇది నాకు కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. మ్యాండటరీగా లోపలికి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు హెడ్ కవర్ చేసుకోవాలని మాకైతే తెలీదు. బట్ బాయ్స్కి అయితే అక్కడే ఇలా ఆరెంజ్ క్లాత్ పెట్టారు అండ్ దాన్ని హెడ్కి కట్టేసుకున్నారు. అండ్ గర్ల్స్ ఏమో ఇలా చున్నీ వేసేసుకున్నాం. కొంచెంసేపు కూర్చొని అలా వాళ్ళ ప్రేయర్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసేసాము. దెన్ హియర్ కమ్స్ ఫ్రీ ఫుడ్. ఎప్పుడు వినడమే కానీ ఈసారి ట్రై చేసాము. యాక్చువల్లీ చాలా గ్రేట్. అసలు వాళ్ళకి ఎంత ఏంటి అని కౌంట్ ఏమి ఉండదు. ఎంతమంది వచ్చినా ఇలా ఫ్రీ ఫుడ్ అయితే పెట్టేశారు. ఇంకా గ్రూప్ పిక్స్ తీసుకొని ఇంటికి వచ్చేసాం. Sweden's history stretches back thousands of years, from Viking explorations to its rise as a European power. During the Middle Ages, Sweden was part of the Kalmar Union, before gaining full independence in the 16th century under King Gustav Vasa. The 17th century marked Sweden's golden age, expanding its influence across northern Europe. After military defeats, Sweden adopted neutrality, staying out of major wars like the World Wars. Today, Sweden is known for its strong democracy, social welfare system, and contributions to science, culture, and human rights. Its peaceful evolution reflects a balance of tradition and modern innovation. Sweden's enemies, including Russia, arose to attack it in the Great Northern War. Sweden was led by Charles XII, an extraordinary leader who in the Battle of Narva in 1700 led his men to victory over a Russian force 3 times the size of his own. But then, some years later, he made a mistake Napoleon and Hitler would also make. He invaded Russia. Bad idea, catastrophe, thousands dead, Russia rises, Sweden declines. Empire over. Parliament thereafter did most of the governing until the monarchy's final absolutist roar arrived with Gustav III, who invested himself with immense powers and reigned as an enlightened despot until he was assassinated. Meanwhile, Sweden had experienced a flourishing of science and culture. This rendition of the periodic table shows how many elements were discovered by Swedish scientists. 18, tied with Germany and second only to Britain. But Sweden had developed an unhealthy obsession with fighting Russia, and there was more war and Sweden lost Finland to Russia. Then a French guy became king of Sweden, and Norway too, after Sweden took over Norway via a short war that would prove to be the last Sweden would ever fight, thereafter preferring neutrality. Meanwhile, as the 19th century stomped on, Sweden's population grew, and many emigrated to America, and industrialization slowly stamped its mark upon the nation. Norway broke away peacefully in 1905, and Sweden developed its renowned social welfare system, and remained neutral during both World Wars and the Cold War. In 1995, Sweden joined the EU. A big bridge was built linking Sweden to Denmark, and the number of non-Swedes began to balloon, with a large spike occurring during the 2015 migrant crisis. Following the 2022 Russian invasion of Ukraine, Sweden did something it avoided for many years, applied for membership in NATO. Anyway, today Sweden is one of the richest nations in the world, with a quality of life, and has also managed to produce excellence and noteworthiness in multiple fields, ranging from cinema and science to music and literature. So that's it for Sweden, and that's all from me for now. The struggle has only just begun. The climate justice movement have been doing these things for decades, and we have been met with only deaf ears. We feel like we have no other choice but to sit here and disrupt this system in order to get our voices heard.
VGN presenting villa plots at OMR Pudupakkam, Begin Siriseri IT Park. Call 044-400-24032. உலகின் உயரிய விருதாக போற்றப்படும் நோபல் பரிசு எப்போது முதல் வழங்கப்படுகிறது, அதன் பின்னணி என்ன, விரிவாக பார்க்கலாம். ஆல்ஃபிரட் நோபல் அமைதியின் தூதுவராகவும் நல்லிணக்கத்தை விரும்புபவராகவும் தற்போது அறியப்பட்டிருக்கும் இவர் ஒரு நாசகார விஞ்ஞானி. நோபல் என்ற இவரது பெயரில்தான் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. அது எப்படி வந்தது என்பதை அறிய ஆல்ஃபிரட் நோபலை பற்றி தெரிந்து கொள்வது அவசியம். வேதியியலாளர், பொறியாளர், ஆயுத தயாரிப்பாளர் என பன்முகங்களை கொண்டவர் ஆல்ஃபிரட் நோபல். ஃபோர்ப்ஸ் ஆயுத உற்பத்தி நிறுவனத்தின் உரிமையாளரான அவர்தான் டைனமைட் எனப்படும் வெடிபொருளை கண்டறிந்தவர். அவரது 350க்கும் மேற்பட்ட கண்டுபிடிப்புகளில் பெரும்பாலானவை ராணுவத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஆயுதங்கள், வெடிமருந்துகள் தொடர்பானவை. இவற்றுக்கான காப்புரிமை பெற்றதன் மூலம் வாழ்நாள் முழுவதும் நோபலுக்கு கோடிக்கணக்கில் பணம் வந்தது. 1833ஆம் ஆண்டு ஸ்வீடனில் பொறியியலாளர் நிறைந்த குடும்பத்தில் பிறந்த ஆல்ஃபிரட் நோபலுக்கு 3 சகோதரர்கள். அவர்களில் ஒருவரான லுத்விக் 1888ஆம் ஆண்டு மரணமடைந்துவிட ஒரு பிரெஞ்சு செய்தித்தாள் ஆல்ஃபிரட் நோபல் இறந்துவிட்டதாக செய்தி வெளியிட்டிருந்தது. அவரது சகோதரரை ஆல்ஃபிரட் நோபல் என அந்த பத்திரிகை தவறாக நினைத்துவிட்டதே அதற்கு காரணம். ஆனால் மரண வியாபாரியின் இறப்பு என அந்த பத்திரிகை இட்டிருந்த தலைப்புதான் நோபலை அதிர்ச்சியில் உறைய வைத்தது. தனது மரணத்திற்கு பின்னர் தான் மதிக்கப்பட வேண்டும் என்று நினைத்த ஆல்ஃபிரட் நோபல் தனது பெயரில் பரிசை உருவாக்கினார். மனித குலத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு பங்களித்தவர்களுக்கு இயற்பியல், வேதியியல், மருத்துவம், இலக்கியம் மற்றும் அமைதி ஆகிய 5 துறைகளில் பரிசு வழங்க தனது சொத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று உயில் எழுதி வைத்துவிட்டு 1896ஆம் ஆண்டு மறைந்தார். அதன்படி 1900ஆவது ஆண்டு நோபல் அறக்கட்டளை ஏற்படுத்தப்பட்டது. முதல் நோபல் பரிசு 1901ஆம் ஆண்டு வழங்கப்பட்டது. ஆல்ஃபிரட் நோபல் உயில் எழுதியபோது ஒன்றாக இருந்த நார்வேயும் ஸ்வீடனும் 1905ஆம் ஆண்டு பிரிந்தன. இதனால் அமைதிக்கான நோபல் பரிசு மட்டும் நார்வே நாட்டின் ஆஸ்லோ நகரில் வைத்து வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. ஆல்ஃபிரட் நோபல் இறந்த டிசம்பர் 10ஆம் தேதியன்று ஆண்டுதோறும் அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்படுகிறது. மற்ற பரிசுகள் ஸ்வீடனில் உள்ள ஸ்டாக்ஹோம் நகரில் வழங்கப்படும். பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு 1968ஆம் ஆண்டு ஸ்வீடன் நாட்டு தேசிய வங்கி 300வது ஆண்டு விழாவை கொண்டாடியதன் நினைவாக ஏற்படுத்தப்பட்டது. நோபல் அறக்கட்டளையின் தற்போதைய மதிப்பு 4000 கோடி ரூபாய் வரை இருக்கும் என கணக்கிடப்படுகிறது. நோபல் பரிசாக 24 கேரட் தங்க முலாம் பூசப்பட்ட பதக்கம், பாராட்டுரையுடன் கூடிய பட்டயம், சுமார் 8 கோடி ரூபாய் பரிசுத் தொகை ஆகியவை வழங்கப்படுகின்றன. VGN Varnabhumi Phase 2 price 2,999 per square feet. Call 044-400-24032. Hello everyone, very good morning. वेलकम टू RBT लर्निंग चैनल। तो जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 5 कंपनीज़ को कवर किया था, जैसे है पोर्चुगीज़ कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच कंपनी, डैनिश कंपनी, फ्रेंच कंपनी। तो आज इस लेक्चर में हम लोग लास्ट कंपनी जो है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लेने वाले हैं। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो कॉल्ड एज एन सेविस्का ऑस्टेंडिस्का कैंपेन was founded in the year 1731 for the purpose of conducting trade with China and eastern part of India। तो ये कंपनी को कभी फाउंड किया था? 1731 में फाउंड किया था और ट्रेड इसका पर्पस था फॉर चाइना से एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से। और ये जो वर्ड्स हैं सेविस्का, ऑस्टेंडिस्का, ये वाले वर्ड्स स्वीडन लैंग्वेज के वर्ड्स है। स्वीडन कंट्री है, स्वीडन लैंग्वेज चलती है, उसके वर्ड्स हैं। After Great Northern War between the Sweden and Russia, Sweden seen that trade was option for rebuilding of country। अभी क्या हुआ था ना, एक नॉर्थन वॉर हुई थी, किसके बीच में? स्वीडन और रशिया के बीच में। जो स्वीडन है ना, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो स्वीडन ने क्या सोचा कि है ना, हम लोग को शायद ट्रेड करेंगे तो हमारी कंट्री क्या होगी, रीबिल्ड होगी। After war, greatest problem was that the country wouldn't have enough resources। उनके पास इतने सारे resources भी नहीं थे जैसे अपने आप को वो
रीबिल्ड कर पाए। स्लोली कंट्री स्टार्टेड इट्स ट्रेड, और धीरे धीरे फिर उन्होंने अपना ट्रेड करना स्टार्ट किया। क्विकली एंड ईजिली कंपनी बिगेन इट्स ट्रेड एंड स्टार्टेड फर्स्ट कंपनी इन द ईयर 1731 में उन्होंने अपनी फर्स्ट कंपनी को स्टार्ट किया। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज लास्ट ऑफ मोर प्रोमिनेंट यूरोपियन कंट्री। मैंने बताया था कि ये लास्ट कंट्री है, लास्ट यूरोपियन कंपनी है। इंगेज इन ईस्ट इंडिया ट्रेड विद द एडवेंस ऑफ ईस्ट इंडिया ट्रेड इन 18th century। 18th century में ये लास्ट कंपनी थी जो स्टार्ट हुई थी। इंडियन एंड चाइनीज़ गुड्स वर इम्पोर्टेड टू स्वीडन में इम्पोर्ट किए जाते थे। कौन से गुड्स? चाइना और इंडियन गुड्स। सिल्क, स्पाइसेस, टी एक्सेट्रा भी ये यहाँ से बॉट किए जाते थे इंडिया एंड चाइना से, एंड सोल्ड किए जाते थे स्वीडन विद अ ग्रेट प्रॉफिट्स में सोल्ड किए जाते थे। लैंड रूट्स थ्रू विच दिस कंपनी हैड ट्रेड वॉज सिल्क रूट्स। कौन से रूट्स यूज़ करते थे? सिल्क रूट वर्ड है। सिल्क रूट होते क्या हैं? सिल्क रूट्स रेफर टू नेटवर्क ऑफ एंशिएंट ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग टू एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। तो ये रूट्स हैं किससे कनेक्टेड हैं? एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका से। दीज रूट्स मेजरली यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सिल्क टू कंपनी। मोस्टली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट क्या किया जाता था? सिल्क किया जाता था। ये उनका फ्लैग है। कंपनीज बिजनेस कंटिन्यूड मोर देन 80 ईयर्स तक इनका बिजनेस चला था। ड्यूरिंग दैट पीरियड कंपनी बुल्डेड 38 शिप्स बुल्ड किए थे एंड मेड मोर देन 130 ट्रिप्स की थी। कंपनी इमीडिएटली बिगेन टू सक्सेसफुली कम्प्लीट विद द अदर स्टैब्लिश नेशन। तो धीरे धीरे कंपनी अपने आप को इस्टेब्लिश किया और बढ़ाते गई, और अपने नेशंस को, अपने कंट्री को उसने बहुत सारी। In the year 1813, Sweden East India Company's trades was given up। तो 1813 में स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड अपना क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। क्योंकि क्या हुआ ना, गुड्स वर नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल इनफ बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल चेंजेस इन द कंट्री। कुछ पॉलिटिकल चेंजेस आई कंट्रीज़ में, तो इनके ट्रेड को क्या होने लगा? इफ़ेक्ट होने लगा, और प्रॉफिट्स भी गेन नहीं हो रहे थे। और जिस कंपनी में क्या प्रॉफिट्स नहीं है, वो कुछ भी नहीं, उस कंपनी को चलाने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है, बिकॉज प्रॉफिट्स ही नहीं है तो वो कमाएंगे कैसे। तो बस यही था इस लेक्चर में। और अगर आपको कुछ भी नोट्स वगैरह चाहिए तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है उसकी, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो नोट्स। बस थैंक यू, टेक केयर, फिर न्यू वीडियोज़ के साथ मिलेंगे।